So good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 8th of October 2024 and we'll start with the first news headline for the day. So the first news headline for the day is basically the Nobel Prize for the medicines have been announced, and the Victor Ambrose and Gary Rukovin have won the Nobel Prize in medicine. They won the Nobel Prize for 2020 for discovering microRNA. So what are the name of the winners? So the name of the winner is Victor Ambrose and Gary Ruvkun, and they won the Nobel Prize in medicines for discovery of the microRNA. Now they were awarded the prestigious Nobel Prize for the discovery of microRNA and its roles in post-transcriptional gene regulation. So this was their main contribution for which they were awarded with the Nobel Prize 2024. Please remember their names, Victor Ambrose and Gary Ruvkun. क्या चीज़ इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी किया? So they have discovered discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. So this is one important news that we have to cover. Now the second important news, basically this is not news as such. It will become a news tomorrow when the results of these elections which took place in Haryana and Jammu and Kashmir will be announced. As of now, Bharatiya Janata Party is leading in Haryana, whereas the India Alliance is leading in Jammu and Kashmir. So these are the two big news related to the elections which recently took place in Haryana and Jammu and Kashmir. Bharatiya Janata Party is leading in Haryana, whereas India Bloc and other subsidiary parties are leading the elections of the Jammu and Kashmir. Now the next important news headline for the today with us is related to Maldives. Now with Maldives facing a forex crunch, India gives $750 million currency swap arrangement. Now this is one important news because after the tussle which was started by the three ministers of Maldives last year, now Maldives seems to learning his lessons quite efficiently. But again, a friend in need is a friend indeed. So Maldives is recently facing the financial situation or the financial crunch. So to help his friend, India has agreed to do a $750 million of currency swap arrangement. Now India signed a major currency swap agreement with the Maldives for $750 million to help the island nation tide over its current foreign currency crunch after Prime Minister Narendra Modi met with Maldivian President Mohammad Muizzu in New Delhi on Monday. So while his visit to India, Mr. President Mohammad Muizzu met with the Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi, and while during this particular meeting, India, being a good neighbor, being a good friend, has helped Maldives by allocating $750 million in a currency swap arrangement or a currency swap agreement. Now the currency swap agreement will be available until 2027. It enables payment between the two countries to be made in different currencies. So what is a currency swap arrangement? So basically the countries which are involved in currency swap arrangement can make payment in different currencies. Like Maldives अलग currency से payment कर सकता है, India अलग currency से payment कर सकता है. This is all about currency swap arrangement, and this currency swap arrangement is scheduled to run until 2027. Now the next important news headline is related to Kolkata, where Central Bureau of Investigation has filed the charge sheet in the RG Kar Medical College and Hospital rape case. RG Kar Medical College और Hospital में जो 9th of August 2024 को rape हुआ था, उस particular रेप केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चार्जशीट फाइल कर दी है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ द मेन अक्यूज्ड हु वाज अरेस्टेड prima facie Sanjay Roy. Sanjay Roy has been named as the sole accused in this particular charge sheet. Central Bureau of Investigation has confirmed that Sanjay Roy is the only accused arrested in the connection with the crime. So this is one important news. The main accused Sanjay Roy is the primary or the main accused said by the Central Bureau of Investigation, and as per the latest report of the Central Bureau of Investigation, Sanjay Roy is only the main accused, and apart from Sanjay Roy, Central Bureau of Investigation was unable to nab any person, or there might be possibilities that no one else was involved, but those are the things which are to be seen at the latest stage. Now we are moving into the next important part. Again, the elections have been concluded in Haryana and Jammu and Kashmir, and after the elections of Haryana and Jammu and Kashmir, now the focus shifts on Maharashtra and Jharkhand.
So the elections are in Jharkhand and Maharashtra. So because of those reasons, you will be seeing a lot of political news items, but we won't be giving any heed to those news items. But again, the one important news that we have to cover is basically yesterday, a day before yesterday, when Indian Air Force celebrated its 92nd raising day. Right, celebrating this particular raising day, there was a parade which was organized, or there was an air show which was organized by the Indian Air Force on the Marina Beach in Chennai. So while conducting this whole air show, the expected person were a lot more, the person which came were a lot more than expected. जो पर्सन आए देखने के लिए इस एयर शो को, वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर था एक्सपेक्टेड नंबर से, और इसके लिए जो वहाँ पे मैनेजमेंट था, दैट वर नॉट इनफ. So in this whole process, 4 people have lost their life. A day after, 5 person who visited the air show organized by the Marina Beach in Chennai died. So total 5 people have lost their life while watching this particular air show which was organized at the Marina Beach. Now the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has announced a rupees 5 lakh ex gratia for the people who have lost their life in this particular horrific incident. Now, जो नंबर एक्सपेक्ट किया गया था, दैट वाज क्लोज टू 5 to 7 लाख, बट जो एक्चुअली में लोग देखने आए, ये एयरफोर्स का जो शो था, दैट वर लाइक अराउंड 15 लाख. सो वो जो नंबर्स था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज, एक्चुअली दिस इज वन इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वी हैव टू कवर विद अटमोस्ट ऑनेस्टी. नाउ so global body suspends Delhi Zoo membership over welfare of the elephant. So the World Association of Zoo and Aquarium, a global alliance, on Monday suspended the membership of Delhi's National Zoological Park for 6 months. So Association of Zoo and Aquarium has suspended the license or the membership of Delhi's National Zoological Park for 6 months, and the reasons were very simple why this particular membership was suspended for the 6 months period, because concerns were related to the welfare of an African elephant Shankar. So there is an African elephant whose name is Shankar. Now the condition, or the condition of this particular elephant Shankar. Now this particular elephant Shankar was gifted to India in 1996 to the president of India, to the then president of India, Mr. Shankar Dayal Sharma, by Zimbabwe. So 1996 में शंकर दयाल शर्मा जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उनको ये एलिफेंट गिफ्ट किया था जिम्बाब्वे ने. और अभी इस एलिफेंट की जो कंडीशन है, दैट इज नॉट गुड, एंड फॉर द सेम रीजन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम हैव सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ Delhi's National Zoological Park for a period of 6 months. So this is one important news that we have to cover. Now we are moving into the next important news headline for the day. So the next important news headline for the day. So after the central government has accredited the status of classical language to the 5 languages, now there have been a call that the Mathili language, the status of classical language, should be given to the Mathili language as well. So now we'll keep on seeing these kind of news item, because in India there are a lot of languages, and now a lot of people will demand that their respective languages should get the status of classical language. Now this is one important article, that how India has to actually balance our relations with various foreign nations and with various foreign countries. Now this is one important article, and we have to see how India is maintaining the balance or the world global power, and along with that particular fact we'll also see that how in last 2 years India's focus have shifted from Russia. Not only India's focus have shifted from Russia, but Russia's focus has shifted from India to China, and how that particular situation is, or how that particular event is worrisome for the state of India, we'll also see that. Now let's start with the basic premise of this particular article, and the basic premise is basically the 6th Quad Summit, which recently took place in Wilmington, Delaware.
And Wilmington, Delaware is the same place from where Mr. Joe Biden belongs. So, Prime Minister Narendra Modi participation in the sixth Quad Leaders Summit in Wilmington, Delaware, US on September 21, 2024 has raised further hopes of consolidating security cooperation among the four leading maritime democracies in the Indo-Pacific. So after this particular summit which took place on 21st of September 2024, क्वाड समिट विल्मिंगटन डेलावेयर में जो हुई थी, इसके बाद बेसिकली क्या हो गया कि इंडिया की जो होप्स हैं दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. नाउ द क्वाड इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो दिस ईयर जो 6th हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? विल्मिंगटन डेलावेयर में. नाउ नेवरदलेस इट वाज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल्स ट्रिप टू रशिया इन अर्ली सितंबर फॉर द ब्रिक्स NSA meeting, which included a high-profile personal meeting with Russian President Vladimir Putin that needs greater analysis. So, you know, the author of this particular editorial is putting a lot of stress on one specific, one specific portion, and that specific thing is, after the Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट हो गया था यूक्रेन, फिर जो ब्रिक्स का एक सबमिट हुआ था, ब्रिक्स के जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका जो एक सबमिट हुआ था, उस सबमिट में बेसिकली क्या हुआ था, उस सबमिट के साइडलाइंस पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मिस्टर अजीत डोवाल, उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको पूरा सारे रीजंस एक्सप्लेन किए थे कि क्यों बेसिकली नरेंद्र मोदी जी जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके यूक्रेन विजिट करने का मेन रीजन क्या था. दोज वर द थिंग्स दैट वर बीन एक्सप्लेन्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल टू द रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin. Now, Mr. Doval has also one-on-one parleys with the Chinese Foreign Minister Wang Yi, which was equally significant since India is leaving no stone unturned to resolve the 4-year-old military standoff with China at the line of actual control. So now, apart from this particular visit, or apart from this one-on-one meeting with the President of Russia, Mr. Vladimir Putin, our national security advisor also met the Chinese foreign minister Mr. Wang Yi, and this particular visit was important because for the last 4 years India have been trying continuously to resolve the issues with the state of China or the Republic of China. जो हमारे बॉर्डर पे इश्यूज थे चाइना के साथ में, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए लास्ट 4 ईयर से बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रही हैं दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और चाइना. इसी को लेकर के इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मिस्टर वोंगी से मिले. इंडिया इज करंटली बिजी bargaining with China and protecting its interests while trying to keep up the US engaged in maintaining a rule-based order in the Indo-Pacific. So now this is a kind of diplomacy that why India is trying to sort its issues with the state or the Republic of China. Now the aspiration of India is that the United States of America should maintain a order in the Indo-Pacific region. And why this particular order in the Indo-Pacific region becomes very, very important, because time and again China has tried to establish its influence in the Indo-Pacific region for the similar reason, for the same reason, to protect the solidarity or protect the security, or to protect the interest of each and every country in this specific region. This is the aspiration of India, that US should maintain the law and order in the Indo-Pacific region. This is a kind of a diplomacy that India is playing very well at this particular moment. Our relation are not soiled with any country. Our relations are not soiled with any country, whether it is Ukraine, whether it is Russia, whether it is United States of America, whether it is UK, whether it is Canada, whether it is XYZ, आप किसी भी कंट्री के साथ ले लीजिए, हमारे रिलेशंस उस समय उतने खराब नहीं है जितने होने चाहिए. बट अगेन अब इसमें बेसिकली एक चीज और आ रही है सामने कि चाइना गेट द एडवांटेज ऑफ दिस स्पेसिफिक इशू बिकॉज चाइना हैज दिस अटमोस्ट क्लैरिटी दैट चाइना के जो रिलेशंस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है. दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड और वेल प्रूवन फैक्ट. नाउ व्हाट हैपेंड, now India's relations with United States of America are pretty good. और रशिया को जो पूरा मेन एजिटेशन फेस करना पड़ रहा है यूक्रेन में, वो कहाँ कैसे फेस करना पड़ रहा है? जो सारे वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस दिए हैं किसने? वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. सो अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से चाइना के पास एक अपर हैंड आ जाता है कि वो रशिया को डायरेक्टली और खुल के रशिया की हेल्प कर पा रहा है, क्योंकि चाइना का जैसा इमेज है, चाइना का जो रोग नेशन का इमेज है, इसकी वजह से जो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनका एक कॉन्टिन्यूसली एक उनका अटेम्प्ट रहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से चाहे जो भी तरीका अवेलेबल हो उनके पास, वो किसी ना किसी तरीके से बेसिकली चाइना और रशिया की जो
सोवरेनिटी है उसको अंडरमाइन कर सकें। अब यहाँ पे क्या होता है कि चाइना ने बहुत खुल के हेल्प की रशिया की ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन वॉर, और जो दोनों ही कंट्रीज के स्टेट हेड हैं इनकी जो विजिट्स हैं आपस में वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो गया कि इंडिया के जो इतने पुराने रिलेशंस थे रशिया के साथ में, अब चाइना के पास एक लेवरेज हो गया लास्ट 2 years में टू बेटर देयर रिलेशन विद रशिया। अब इंडिया ने भी बहुत ज्यादा, इंडिया को बेनिफिट हुआ है लास्ट 2.5 years में जब से वॉर स्टार्ट हुआ। और बेनिफिट क्या हुआ है कि हमने क्लोज टू 12 to 15 बिलियन डॉलर का हमने सेविंग किया है सिर्फ और सिर्फ रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल खरीद के। अब हमारी इमेज इसलिए भी, इंडिया की इमेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज वी कैन एक्ट एज अ एक्चुअल मीडिएटर बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, क्योंकि हमारे दोनों ही कंट्रीज से जो रिलेशंस हैं दे आर एक्चुअली गुड। एंड ऑल्सो एंड द अनदर सप्लीमेंट्री फैक्ट विच विल एक्चुअली हेल्प इंडिया इज दैट इंडिया हैज इट्स रिलेशन, India has good relations with the United States of America. Now, along with the United States of America, United States of America is basically a representative of whole of West. पूरे वेस्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके यूएस के साथ के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, सो यू कैन अज्यूम दैट होल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज स्टैंडिंग विद यू। नाउ वी आर मूविंग इनटू द फ्यू मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो कैसे इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है इंसेंटिवाइज करेगी बहुत सारी चीज़ों को, जो इंडिया का फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द डोवाल पुतिन मीट वेयर मिस्टर डोवाल कन्वेड मिस्टर मोदी's यूक्रेन पीस प्लान में बी interpreted as India's attempt to cross the psychological Rubicon in great power diplomacy. Now, if not mediator, the Doval-Putin meet was after Mr. Modi's first ever visit to Ukraine in August and to Moscow in July. So, India is basically, India can play a role of mediator in this particular war. India एक mediator का role play कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, which is actually good for India. Now, Ukraine on many occasions has asked New India to help resolve the conflict, and Ukraine always has this kind of expectation from India or from us that India will play a great role. India will play a great role in pacifying the situation between Russia and Ukraine, because Ukraine is of the firm belief that India share good bond with Russia, और इसी bond की वजह से रशिया यूक्रेन के पास से confidence आता है that India will definitely help Ukraine in establishing the peace. Mr. Doval subsequently met French President Emmanuel Macron in Paris on the sidelines of annual India-France strategic dialogue to apprise him of India's mediatory effort. So these are the various things that are being, that are being done by the, various personalities. अब इंडिया के जो डिफेंस में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो फ्रांस के भी प्रेसिडेंट से इमैनुअल मैक्रोन से भी मिलते हैं और उन्हें रीजन एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इंडिया कैन प्ले अ रोल ऑफ अ मीडिएटर, इंडिया कैसे एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है बिटवीन दिस वॉर विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम February 2022. Now, but since the war in Ukraine has triggered Russia's total break with the West, Moscow's pivot towards China has become even more pronounced. Functioning more or less as the junior partner of China, Russia has been struggling to preserve its partnership with India since its leverage with China has steadily shrunk due to fierce military resistance by Ukraine. From an Indian perspective, these needs correction because this from Indian perspective this needs correction because the Russia-China economic military ties are getting too close to be ignored by New Delhi. So now while Russia has involved itself in the war with Ukraine, and Russia has actually faced a tough resistance from Ukraine, and the reason is very simple, because whole of this West and United States of America is continuously supplying arms and ammunition to the स्टेट ऑफ यूक्रेन और द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन। अब यूक्रेन के पास बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनेशंस की जो सप्लाई आ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रशिया है उसको एक टफ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है यूक्रेन को, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चाइना टुक द एडवांटेज ऑफ दिस स्पेसिफिक सिचुएशन बिकॉज इंडिया वाज नॉट एक्सप्लिसिटली नॉट सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशंस टू द रशिया। अब ये आर्म्स एंड एमुनेशन सप्लाई मोस्टली किसने की है, मतलब एक ऐसा थ्योरी है चाइना ने, ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ कि चाइना के पास एक लेवरेज अवेलेबल है, वो लेवरेज और किसी कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है। चाइना ने उस लेवरेज को अच्छे से इस्तेमाल किया। जो लोग आर्म्स एंड एमुनेशन सप्लाई कर रहे थे यूक्रेन को, उन लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, ना तो रशिया से ना तो चाइना से, इसलिए चाइना ने खुल के हेल्प की रशिया की, और इसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया गेव इट्स फुल अटेंशन टू द रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अब चाइना और रशिया के रिलेशंस इतने ज़्यादा क्लोज हो गए
दैट इंडियंस कैन नॉट इग्नोर इट. अब इंडिया इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है, दिस इज अ थिंग ऑफ अ मोमेंट, ये चीजें बाद में फिर से नॉर्मल हो जाएंगी. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल. फ्रॉम नाउ द वेस्ट हैज कम टू व्यू इंडिया एज अ बीइंग blatantly indifferent on issues which are of so consequential for the remaking of the global order after the Ukraine conflict shattered the remnants of the post-Cold War landscape by attempting to play a meaningful role. So now, so these are just allegations on India. These are just meaningless allegations on India. There is no truth whatsoever in these allegations. So basically the allegations are that India play very indifferent on different situations. So that is what we call diplomacy, right? You have to play indifferent in every different situation. You cannot remain same. If you remain same in every kind of situation, then what kind of diplomacy is that? So India is adopting a very good method of diplomacy, or India is adopting diplomacy as a very intelligent tool to maintain its relation with each and every country. और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इंडिया और इंडियंस जो है इनको कम से कम चीज़ों की जो हीट है वो फील करनी पड़े, राइट? एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दीज टू वॉर्स दैट आर गोइंग ऑन इन यूक्रेन एंड इजराइल एंड ईरान. इजराइल, ईरान, लेबनान और वो गाजा में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक इशू. बट हमारी इमेज इस समय ऐसी है कि हम सबसे कम अफेक्टेड हैं. अब अगर आप एक तालाब में रहेंगे तो सारे ही लोग बेसिकली तालाब में एक ही जैसे मतलब एक ही पानी पियेंगे, बट द पॉइंट इज कि हम तालाब में रहकर के भी सबसे साफ पानी पीने वाले हम ही लोग हैं. सो सबसे बेटर कंडीशन हमारी ही है, ऑल्दो कंडीशन किसी भी कंट्री की अच्छी नहीं है, बट हमारी कंडीशन जितनी भी कंट्रीज हैं सबसे अच्छी हैं. और इस वॉर का इम्पैक्ट आप लोग लास्ट 3 डेज से देख पा रहे होंगे. जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उस पर भी इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. 10% के आसपास का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो रिलायंस का कम हो गया. सो दीज आर द थिंग्स, ये वॉर का इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कंट्री पे भी. Now, however, Russia's foreign policy under Mr. Putin has been primarily driven by the two key objectives: a deepening Moscow-Beijing nexus and the promotion of a multipolar world, which would counter the hegemonic dominance of the Western bloc led by the US. Mr. Putin's anti-Western strategy includes both China and India as close allies. So now Russia is working on the next front altogether. And what is Russia's basically front? That Russia is actually working with a twofold objective when it comes to diplomacy. Russia is working with a twofold objective when it comes to diplomacy. And what is its twofold objective? The first objective is to to strengthen its cooperation or to strengthen its relation. The main objective of Russia is to strengthen its relation with the the Republic of China. The Republic of China. And the second objective of Russia is to how to break the hegemony of this entire West led by the United States of America. And while diminishing or while attacking on the hegemony of this entire West led by United States of America, Russia strongly believes that China and India could be there or could be Russia's close allies. So because of this specific reason, India or China, or India, China and Russia, this love triangle becomes so complicated, right? Because there are two countries that are known, these countries are basically Russia and China, जिनका basically पूरे ही West और United States of America से relations अच्छे नहीं हैं. And when it comes to India is having a kind of decent relationship with each and every country, basically the entire West led by United States of America. इंडिया के रिलेशन बस उस लव ट्रायंगल में सिर्फ चाइना से अच्छे नहीं है. और अब रशिया बेसिकली क्या चाह रहा है कि जो वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म करने के लिए चाइना और रशिया दोनों को साथ में लाने की कोशिश कर रहा है. और इसी पर्टिकुलर रीजन का हमें बेनिफिट मिल सकता है कि हम अगर किसी ना किसी तरीके से कुछ दांव पेंच बिठाएं तो हमारा जो चाइना के साथ में इतने लंबे टाइम से बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है, हम उस बॉर्डर डिस्प्यूट को इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं. अब इस हम आर्टिकल को थोड़ा सा फटाफट 2 से 3 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे. द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रिलेटेड टू द मैरिटल रेप and the recent affidavit which was filed by the union government related to this particular specific issue of marital rape. We'll see that particular news item, but before, let's finish this particular article. Consequently, New Delhi is increasingly finding Moscow's usefulness largely exhausted due to Russia's deepening China connection. China has not only been engineering many of India's security difficulties on their Himalayan borders, but is also trying to profit for them. So basically, why India's why it is an area of concern for India, that the relationship between, or the relations between India and China, the relations between India and China
or the relations between Russia and China are deepening day by day, because China or the Republic of China is causing a lot of problems for India by providing direct and indirect support to the state of Pakistan, and by doing a lot of construction on the Himalayan sidelines. So that now this specific reason, for these specific reasons, it is extremely difficult or extremely tough for India to rely on China, because for the last 20 to 30 years China has been continuously helping the state of Pakistan, and Pakistan is causing a lot of problems for India. So because of all those reasons, it is extremely important for us to resolve our issues with China, because at the end of the day, both China and India are the two fastest growing economies in the world. We are the two largest populated country in the world, so we can break the hegemony of West if we took this particular opportunity with utmost honesty. Now, the bold rebalancing does not necessarily require anything as far as reaching as a full-fledged India-US alliance. It requires our collective ability to turn increasingly away from the nostalgic images of Russia protecting India from the machinization of the Pakistan, US, China nexus in the Bangladesh war. So now we have to also see that when India was fighting the war with the East Pakistan, which is today's Bangladesh, जब East Pakistan के liberation की लड़ाई चल रही थी, so how Russia helped India. So ये भी है, yes, these are the things of past, but again हमारे ऐसे relations एक time पे रहे कि हम rely कर सकते हैं, and this is the right time when Russia, India and China can try to break the hegemony of entire West led by the United States of America. But to break this particular hegemony, it is extremely important that both India and Russia should establish or stabilize their relations, because until and unless both China and India stabilize their relations, there won't be this possibility that the Asian country will dominate the world for a long time. If you want to dominate, or if you want to establish ourselves as a superpower, then we have to normalize, or we have to stabilize our relationship with China. Until and unless we normalize our relationship with China, there is not a single possibility that will become the Vishwaguru, because China, at the end of the day, China has a lot of advantage which India does not have. So we have to respect those things, we have to respect those choices, we have to respect those privileges. But again, if you want to establish something good, well, then we have to. Yep. So this is the important article which we're going to discuss. The title of this specific article is Unpacking the Center's Affidavit on Marital Rape. So this author of this particular article is Shraddha Chaudhary. She is the assistant professor of law at BML Munjal University. So I hope this particular article will be actually good, because this is authored by assistant professor who is actually teaching law. So let's hope this particular article will have something good. Now, so the marital rape exception in section 63 exception 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Now the Bharatiya Nyaya Sanhita has been has replaced Indian Penal Code. So exception 2 of section 3 of Bharatiya Nyaya Sanhita was exception 2 of section 375 of Indian Penal Code. It states that, now this is the whole bone of contention, this whole statement is the main bone of contention. Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under the 18 years of age, is not rape. So if the age of the wife is not below the 18, which indirectly means if the age of the wife is above 18, then in that specific situation the husband cannot commit the offense of rape on his wife. Now when I was in my law college, when I was not aware about this specific exception, the first question that pops up in my mind was that basically if whether consent is the main objective, or the consent is the main premise for the offense of rape, or is there something else which is the main premise for the offense of rape. Because after reading a lot of case laws, and after doing a lot of research, and after seeing a lot of movies,
It is absolutely clear that when we talk about the offense of rape, the most important or the essential element is the element of consent. The consent should define whether this particular offense would be rape or not. But under Indian criminal law or under Indian penal laws, exception 2 to section 63 of Bharati Nyaya Sanhita clearly provides that exception 2 of section 63 of Bharati Nyaya Sanhita clearly provides that if the husband commits or if the husband is involved in a act of sexual intercourse when the age of the wife is above 18 years, then that particular offense would not amount to rape. So if the age of the wife is above 18, then it is it is absolutely clear that you cannot commit the offense of rape on your wife. Now I don't understand the logic behind this, but it is the law. The law is basically this. So agar aap ek cheez yaad rakhiye, now this the whole comparison has been made in the best possible way. We'll discuss the comparison as well. Most of the arguments made by the center will by now be familiar to those acquainted with the debate around marital rape. So this particular issue of marital rape is not new in India. This particular issue of marital rape is was a old one. Earlier there was a petition in the Delhi High Court. The judgment was delivered by a 2 judges division bench, and that was a split verdict. So because of that specific reason, because of being the split verdict, there was no conclusivity that what will be the status of the marital rape. Now when Supreme Court of India said to the central government that until and unless you file an affidavit, will start entertaining the petitions related to the offense of marital rape. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक petition अपना एक affidavit फाइल किया और उसमें बेसिकली ये बताया है क्यों इंडिया में marital rape का जो ऑफेंस है इसको हम लेकर के नहीं आ सकते हैं. तो पहला प्राइमरी रीजन ये था अंडर और ये सोशियोलॉजी में चीज बहुत बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन की गई है दैट इफ गिवन द इंडियन सोशल बैकग्राउंड, इंडिया का जैसा सोशल बैकग्राउंड है या इंडिया की जैसी सोसाइटी इंडिया में प्रिवेलेंट है, अगर हम इस सोसाइटी में मराइटल रेप जैसे ऑफेंस को अगर या मराइटल रेप को हम एक ऑफेंस बना देंगे या इस चीज को हम ऑफेंस कंसीडर करने लगेंगे तो क्या होगा कि जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है इस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. सो नाउ द फैक्टम ऑफ मैरिज इट इज आर्ग्यूड क्रिएट्स अ कंटिन्यूइंग एक्सेप्शन ऑफ अ रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस व्हिच इज एब्सेंट इन केस ऑफ अ स्ट्रेंजर और अनदर इन इंटीमेट रिलेशनशिप. नाउ the main factum or the main issue or the main thing which is important for us to understand is that while we talk about this offense of the marital rape, one thing becomes absolutely and abundantly clear that once the woman is married, there is this implied perception or implied notion in the mind of the husband that he can establish the sexual intercourse at any given point of time despite the consent, because once you have executed or solemnized your marriage, it is true in India that the wife cannot say no. The wife do not have authority to say no if the wife is married to the husband. The marriage creates a continuing exception of reasonable sexual access is at the outset a very dubious claim. Continuing expectation that a husband will provide for his wife, surely that cannot be ground for saying that if a wife takes her husband's car and sells them as a scrap metal without his consent, she has not committed theft. So this is basically an analogy which is given by the author of this specific article, that if after the marriage the husband can involve himself in the act of sexual intercourse at any given point of time, whether the wife is consenting for that act or not. So to explain this situation in the best possible way, ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल क्या बेसिकली कि हस्बैंड की जो भी चीज़ होती है उस पर वाइफ इज का जो हक होता है वो बराबर का होता है. सो अगर क्या वाइफ अगर चाहे तो हस्बैंड को जो कार बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको क्या उसके बिना परमिशन के स्क्रैप में जाकर के बेच सकती है ना? नहीं बेच सकती, आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा. जब आपको अपने हस्बैंड की फेवरेट कार बेचने से पहले आपको उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत है. सो व्हेन इट कम्स टू बॉडीली ऑटोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें उस पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? ठीक है, फिर सेंटर का है कि ये भी इस पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि दिस सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ अ वेरी प्राइवेट अफेयर, though it will become very tough for the petitioners
or it will become very tough for the the defendants to prove that they were not involved, they were not involved in any kind of non-consensual or the offense, or they have not conducted or committed the offense of marital rape. आप consent का element नहीं प्रेजेंट था उस टाइम पे, या कंसेंट का एलिमेंट प्रेजेंट था जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप पे एलिगेशन लग रहा है, उस टाइम पे कंसेंट प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जितने सॉलिड डॉक्यूमेंट्स या सॉलिड प्रूफ की ज़रूरत होगी उतने सॉलिड प्रूफ को प्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा. दिस इज द मेन थिंग विच इज द होल सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस होल डिबेट ऑफ मैरिटल रेप. नाउ फिर कैसे ये पूरी जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है उसकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट करेगा. अगेन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिया में बिलीव कर रहे हैं कि अगर ये मैरिटल रेप का जो ऑफेंस है या मैरिटल रेप की जो प्रॉब्लम है अगर हम इसे एक ऑफेंस बना देते हैं, सो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पे इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे, जो कि सही बात भी है. बिकॉज अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, टेक वन एग्जाम्पल देन विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. there is a newly wedded couple X and Y, and now this X and Y were husband and wife. Now X is the wife and Y is the husband, so this the offense of rape is not a gender neutral offense, it is a gender specific offense. So we have to take the example of a woman. Now suppose the woman is not happy with the husband due to some issues. Now when the husband was trying to when they were having this whole intimate act, फिर उसके बाद अगर वाइफ जाकर के कंप्लेंट फाइल कर देती है कि दैट माय कंसेंट वाज नॉट टेकन बिफोर परफॉर्मिंग दैट स्पेसिफिक एक्ट, देन हाउ विल द हस्बैंड और हाउ द हस्बैंड विल प्रूव हिज इनोसेंस, because the whole burden will lie on the husband itself, that he has to prove himself innocent, because no one else will be there to justify or to support the claim. At the one side it is the wife which will raise or which will impose certain kind of objections or allegations, or raise certain kind of allegations on the husband. Now husband has to disprove this whole thing in the court of law. सो इस चीज़ को लेकर के कि जो चीज़ें इतना एक प्राइवेट और एक इंटीमेट अफेयर हैं उस चीज़ को आप एक कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे प्रूफ करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द मेन बोन ऑफ कंटेंशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग दैट दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, द ऑफेंस ऑफ रेप शुड बी इंक्लूडेड और शुड बी इंक्लूडेड in the Bharatiya Nyaya Sanhita, or central government is not even concerned, is not thinking that whether it should remove exception 2 of section 63 from Bharatiya Nyaya Sanhita, because the stand of government is pretty clear that if we remove exception 2 related of section 3 of section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita, then there is going to be a lot of instability or instability in the society, and this instability will, because of the very very small or a very very specific reason कि आप कंसेंट जिस पर्टिकुलर टाइम पे एक्ट परफॉर्म किया जा रहा था उस टाइम पे कंसेंट थी या नहीं थी, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे वो आपके पास बहुत कम होंगे. वन इज गोइंग टू बी बेसिकली द प्लेंटिफ एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी द डिफेंडेंट. सो दो पार्टीज तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. इन दोनों के स्टेटमेंट्स के अलावा एक एलिगेशन, वाइफ एलिगेशंस लगा रही है कि मेरी कंसेंट नहीं थी और हस्बैंड कह रहा है कि कंसेंट अवेलेबल थी. अब इन दोनों ही लोगों के स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए देयर शुड बी समथिंग सब्सटैंशियल जो स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करे. बट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो रहा है कि ये जो पूरा डिबेट हो रहा है वो इसी चीज़ को लेकर के हो रहा है कि इस चीज़ को प्रूफ करना बहुत टफ है. और दूसरा, अगर ऐसे केसेस सामने आने लगेंगे तो एक वेग आर्ग्यूमेंट ये भी है कि लोग शादी करना बंद कर देंगे, राइट. बट अगेन दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच आई वांट टू मेक, दैट द मैरिज डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस to have this the word, exact word which was used in this particular article was reasonable sexual access. So by performing this holy ceremony of marriage, or the ceremony in itself does not give you the license to have the reasonable sexual access is what is expected, but you cannot claim or you cannot think wife as your property. So this is one important article. Now we'll with this move to the next important article.
So this is the last article for today, for 8th of October 2024. This is the last or the main important article that we are going to discuss. So recently there was the judgment of the Supreme Court, or there was an order of the Supreme Court of India, and in this particular order, the Honorable Supreme Court of India has declared that the caste-based division of the labor in prisons is unconstitutional. This particular judgment was delivered by a three-judges division bench led by D.Y. Chandrachud, and while delivering this particular judgment, the Honorable Supreme Court of India has given a 2 months time or a 3 months time to the central government to change or to amend the Model Prison Manual of 2016 and the Model Prison and Correctional Services Act 2023. The 2016 manual in particular faces criticism for offering a vague definition of habitual offender, allowing states to define the term based on stereotypical assumption against denotified tribes. Consequently, the court ordered that the necessary reforms should be implemented in both the 2016 and 2023 Act within 3 months. So while pronouncing this particular judgment, the Honorable Supreme Court of India was of the firm opinion that the Parliament should amend this prison manual of 2016 and this Model Prison and Correctional Services Act 2023 within 3 months. Now this particular thing has to be done ASAP. And why this particular thing needs to be done ASAP? Because there was a certain kind of bias which was there in all these acts, which was against the denotified tribes. एक बहुत ही stereotypical assumptions थे कि अगर आप इस specific caste को belong करना है तो ये particular work जो है वो आप ही करेंगे. ऐसा एक बहुत ही कॉमन नोशन था जेल्स वगैरह में. और यहाँ पे इस एग्जाम्पल को बहुत बेस्ट पॉसिबल वे में समझने के लिए एक वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल भी दिया गया है. और वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल क्या है? दैट वेस्ट द कोर्ट हाईलाइटेड दैट रूल 404. नाउ दिस स्पेसिफिक रूल हैव बीन डिस्कस्ड. Rule 404 of West Bengal Jail Code stipulates that a convict overseer may be appointed as a night guard only if it does not belong to any class that may have a strong natural tendency to escape, such as men of wandering tribes. Now, how discriminating is this? That Rule 404 of the Bengal Jail Code is clearly stating that कि नाइट ड्यूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जिनके अंदर ऑफेंस करके या जिनके अंदर भागने की टेंडेंसीज नहीं होती हैं. क्या लिखा हुआ है? ही डज नॉट बिलोंग टू एनी क्लास. नाइट ड्यूटी में सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर क्लास के लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जिनके अंदर भागने की टेंडेंसीज नहीं होती हैं. सो somehow it is very discriminating. Somehow it is very discriminative. And how it is discriminative? There is no certain class of people जिसके अंदर भागने की टेंडेंसी होती हैं और नहीं होती हैं. It is very specific. It is very general. It is not specific. But as per the Rule 404 of West Bengal Jail Code, it is very specific that there is a certain class of people who commit crime. वो crime करने के बाद भाग जाते हैं. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है वेस्ट बंगाल कोड का, वेस्ट बंगाल जेल कोड का रूल नंबर 404. सो ये सारे रूल्स ऐसे थे जिन रूल्स को अकाउंट में लेकर के स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दीज रूल्स वर बेसिकली वॉयलेटिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बिकॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 1 डायरेक्टली प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste, race, caste and sex. So basically now these whole jail manuals were very much violating the article 15 clause 1 and also article 17, which is abolition of untouchability, because untouchability has been abolished from India a long ago. Now after the abolition of untouchability there are certain various state mechanism जहां पर अभी भी ये जो untouchability का एवल है आपको देखने के लिए मिल जाएगा. Though it is clearly given in the Constitution of India under Article 17 that untouchability has been abolished, but the kind of rules that we are witnessing in the jail code or the prison manual, which is absolutely clear कि ये चीज़ अभी तक इंडिया से अभी तक गई नहीं है, और इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि उन्हें जेल मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 को एज सुन एज पॉसिबल इन्हें इस चीज़ को रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि इसमें जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स थे और जो लोअर सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं उनके साथ एन नंबर ऑफ तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते थे. और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल और द प्रोटेक्ट हु आर एक्चुअली फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डे. नाउ वी आर मूविंग इन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल.
So Narendra Modi has completed 23 years in public office. He became the chief minister of West Bengal in 2001, and from October 7 2001 to May 2014 he was acting as the chief minister of Gujarat. And after acting as the chief minister, after serving as the chief minister of Gujarat for 13 years, for last 10 and a half years he is serving as the prime minister of this country. So this 23-year long political journey has taught a lot of lessons to our honorable prime minister, and he's saying that his main target is to make India the developed nation, that is Viksit Bharat. Now we are moving into the international section as well. Now in international section, the first important news is basically that the statement was made by the president of Turkey. The statement is made by the president of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, and the statement made by Mr. Erdogan is very clear that Israel has to pay the prices for the genocide which is actually taking place in Gaza. This is one important statement, and Israel has started this whole airstrike in Lebanon, the capital of Lebanon, Beirut, जहाँ पे इन्होंने फिर से एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया. और ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं और इन एयर स्ट्राइक्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ हेजबुल्ला फ्रॉम लेबनन. और अभी एक आज का न्यूज़ है, शायद इसे कल न्यूज़पेपर में डिस्कस किया जाए, कि जो हमस के चीफ थे जिनको इजराइल क्लेम कर रहा था कि उनका सक्सेसफुल असैसिनेशन हो गया है, इस्माइल हानिया, अभी ये स्टेटमेंट आ रहा है या अभी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही दैट इस्माइल हानिया ने ट्राई किया है कतर से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए, एंड ही इज़ मोर एडमेंट कि हम इसराइल से जो वॉर है वो शांत नहीं करेंगे, उसको कम नहीं करेंगे, और उस चीज़ को हम और बढ़ाएंगे ही. और एक साल पूरा होने पे एक जो कल 1 ईयर एनिवर्सरी था, फर्स्ट एनिवर्सरी था, ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इवेंट हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को. सो बहुत सारे रॉकेट्स भी फायर किए हमस और हिजबुल्लाह दोनों ही मिलिटेंट ग्रुप्स ने. So with this, we have completed the news analysis of 8th October 2024, and we'll meet you tomorrow in another session. Till then, bye bye, take care, and do like this video and subscribe to Success Mantra digital channel, and hope you find this particular video informative. And if you find this particular video informative, then do show your support by liking this video and commenting in the comment section. So thank you so much. We'll meet you soon. Till then, bye bye, take care.